Hi guys, and welcome back to yet another exciting episode of Female Cricket Live. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल का मैच जो हुआ था गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच, और फिर हम डिस्कस करेंगे आज का मैच जो होने वाला है आरसीबी और एमआई के बीच। यूपी वॉरियर्स की कप्तान एलिसिया हीली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते गुजरात ने 142 रन्स का एक टोटल रजिस्टर किया। फीबी लिचफील्ड और एशली गार्डनर ने बेहतरीन पारियां खेली, जिसके चलते गुजरात ने एक रिस्पेक्टेबल टोटल रजिस्टर किया। सोफी एक्लस्टन ने बेहतरीन गेंदबाजी की, जिसके चलते उन्हें 3 सफलताएं भी प्राप्त हुई। एक डिसेंट टोटल चेस करते एलिसिया हीली ने यूपी को एक बेहतरीन शुरुआत दी। फिर ग्रेस हैरिस की 60 रन्स की पारी ने यूपी की जीत पक्की कर दी। अपनी बल्लेबाजी के चलते ग्रेस हैरिस को प्लेयर ऑफ द मैच भी घोषित किया गया। जूली, हमने कल डिस्कस किया था कि ग्रेस हैरिस हमेशा से एक ऐसी प्लेयर रही है जो हमेशा गुजरात के अगेंस्ट परफॉर्म करती है। अभी तक हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगेंस्ट गुजरात देखे तो उन्होंने तीन मैच खेले हैं और तीनों में वो प्लेयर ऑफ द मैच रही है। और आपने भी कहा था कि ग्रेस हैरिस का एक इम्पोर्टेंट योगदान रहेगा आज की मैच में। तो आप शुरू करिए और आप डिसिफर कीजिए कि कल का मैच कैसे पैन आउट हुआ। बेहतरीन रहा ग्रेस हैरिस का प्रदर्शन इंडिविजुअली भी, और यूपी वॉरियर्स एज अ टीम भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। गुजरात जायंट्स जो कि टेबल के बॉटम में है, उनके सामने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे यूपी वॉरियर्स से हमें देखने मिला। और आई थिंक कल का मैच जिस तरीके से चल रहा था, मुझे हम वो जो बचपन में गेम खेलते थे ना स्कूलों में, टग ऑफ वॉर, तो मुझे उसकी काफ़ी याद दिला दी। कभी यूपी वॉरियर्स का पगड़ा भारी हो रहा था, कभी गुजरात जायंट्स का पगड़ा भारी हो रहा था। तो काफ़ी मुश्किलें भी थी दोनों टीमों के लिए कि कौन जीतेगा। और आई थिंक एज व्यूअर्स भी हमें पता नहीं चल रहा था कि आई थिंक कौन आज का मैच जीतेगा, क्योंकि एक एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट हमें देखने मिला, और कॉन्टेस्ट विद इन कॉन्टेस्ट भी हमने काफ़ी देखे कल के मैच के अंदर। तो आई थिंक ये WPL के लिए भी अच्छे साइंस है कि ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्टेस्ट आने वाले मैचेस में भी अगर हमें देखने मिले तो बहुत अच्छा हो सकता है। बट आई थिंक टू बिगिन विथ आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी लॉरा वुल्फार्ट फाइनली गेटिंग अ चांस। गुजरात जायंट्स जिसकी हम चर्चा कर ही रहे थे, यजाद, मैं, आप और प्रतीक ऑफ कोर्स की वुल्फार्ट को चांस मिलेगा कि नहीं, और वैसे ही कुछ हुआ। गुजरात जायंट्स ने लिया तहू को रिप्लेस करा। साउथ अफ्रीका की जो बल्लेबाज है लॉरा वुल्फार्ट, उनको मौका दिया। बेथ मूनी के साथ वो ओपन करने आए और अच्छी एक पार्टनरशिप हमें देखने मिली कप्तान मूनी और लॉरा वुल्फार्ट के बीच। 40 रन ये दोनों ने मिलकर बनाए थे। और आई थिंक ये जो गुजरात जायंट्स के लिए जो ओपनिंग स्टैंड था, वो अभी तक इस WPL के अंदर सबसे बड़ा ओपनिंग स्टैंड था, क्योंकि पहले मैच में भी मेरे ख्याल से 3 रन ही बना पाई थी ओपनिंग जोड़ी, उसके बाद 11 रन और ये 40 रन। तो एक स्टेबल स्टार्ट ये दोनों दे पाए। और उसके बाद लगा कि शायद आज जीजी का दिन हो सकता है, अच्छी या बड़ी इनिंग्स हमें किसी भी और बल्लेबाजों से देखने मिलेगी, पर आई थिंक वैसा हुआ नहीं। उसके बाद हरलीन देओल आए और ज़्यादा कुछ उन्होंने करा नहीं, आउट हो गए। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो डुओ है, फीबी लिचफील्ड और गार्डनर, उन्होंने वो 52 रनों की साझेदारी करी, और आई थिंक वो 142 का एक अच्छा टोटल जीजी को पुटअप करने में मदद करी। But I think Chinnaswamy में 142, I think it was never going to be enough in front of a power packed यूपी वॉरियर्स लाइनअप, जिन्होंने पिछले मैच में अच्छा फॉर्म गैदर करा है एमआई के सामने जीत कर। तो उनके सामने एक टफ चैलेंज होने वाला था 142 को डिफेंड करना, और वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि यूपी वॉरियर्स हमें पता है कि वो मैच जीत गए। बट आई थिंक मुझे जब जीजी बैटिंग कर रहा था, तो मुझे एलिसा हीली की कैप्टनशिप की यहाँ पे बहुत तारीफ करनी होगी, क्योंकि अगर हमने देखा होगा तो कल के जो 19 ओवर थे, आपने देखा होगा वो स्पिनर्स ने करे थे, और केवल एक ही ओवर पेसर ने करा था, अंजलि सरवानी ने। तो आई थिंक एलिसा हीली की जो कैप्टनशिप थी, अंजलि ने एक ओवर करा, 13 रन खाए उस ओवर में। तो आई थिंक हीली को पता चला कि शायद आज पेसर्स का दिन है नहीं, तो इसीलिए वो अंजलि के पास दोबारा नहीं गए, और बाकी के 19 ओवर उन्होंने उनके पास जो क्वालिटी स्पिनर्स है उनको दे दिया। और आई थिंक सारे स्पिनर्स ने अच्छा काम करा। एकल्स्टन ऑफकोर्स 3 विकेट्स उन्होंने चटकाए। तो आई थिंक हीली की कैप्टनशिप अच्छी थी, और उसके बाद जब बैटिंग का मौका आया, उन्होंने एक अच्छी स्टार्ट करी। हालांकि किरण नवगिरे जो उनकी ओपनिंग पार्टनर है, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए कल। पर आई थिंक यूपी वॉरियर्स के पास जब ग्रेस हैरिस जैसी बल्लेबाज हो, तो आई थिंक ज़्यादा कुछ मुश्किलें नहीं होंगी उनको आने वाले मैचेस में भी। और ग्रेस हैरिस ने दोबारा एक अर्धशतक लगाया। बैक टू बैक, हम कहेंगे बैक टू बैक वी वुड हैव टू से, क्योंकि हैट्रिक ऑफ हाफ सेंचुरीज हो गई है जीजी के सामने, और 3 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी जीते हैं। तो आई थिंक यूपी वॉरियर्स का एक अच्छा प्रदर्शन। और ऑफकोर्स चमारी आटापाटू, हाउ कैन वी फॉरगेट हर। बुलवाट जैसे जीजी के लिए फर्स्ट मैच खेले, वैसे ही चमारी आटापाटू ने यूपी वॉरियर्स के लिए फर्स्ट मैच खेला। नंबर 3 पे आए बल्लेबाजी करने के लिए, और गेंदबाजी आई वॉज वेरी सरप्राइज कि आई थिंक
फर्स्ट ओवर भी उनसे करा और लास्ट ओवर भी आई थिंक हीली ने उनसे कराया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आई थिंक जी। उनका कॉन्फिडेंस पहली मैच के अंदर हमारी आटापाटू ऑफ कोर्स एक सीजन कैंपेनर है, श्रीलंका की कैप्टन भी है, तो उनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस दिखा था, वो देखकर भी काफ़ी मज़ा आया था। बिल्कुल, जैसा कि हम कल के मैच के पहले डिस्कस कर रहे थे कि सोफी एक्लस्टन ने वो डैंगलिंग कैरेज जो हमने टर्म यूज़ की थी, वो देना चाहिए। तो समहाउ मुझे ऐसा लगा कि कल के मैच चलते वक़्त कि गुजरात जायंट्स की सोच कुछ ऐसी रही थी कि सोफी एक्लस्टन को कल अटैक कर सकते हैं कंसिडरिंग हर रीसेंट फॉर्म, बट वो कुछ इतना पुल ऑफ नहीं कर पाए। आई थिंक अटैक करते हुए उन्होंने विकेट्स गवा दिए अपने। Pratik, how to what extent are you happy about Sophie Ecclestone coming back into form, taking those wickets? We've Well, discussed all season long that she's not been in the best of forms. Azad, so like we discussed yesterday, that not enough batters are coming forward and taking the charge against Sophie Ecclestone. But yesterday was something else, where batters stepped out to her and tried out new stuff, and also ended up falling prey to her because that's the kind of quality she carries around herself, and the consistency with which she hits her lines is something immaculate. So we saw her getting 3 wickets yesterday, two of which were batters stepped out and tried to play an aggressive shot, but again fell prey to her. So I consider her bowling as like one of the most important things, because she was crucial in breaking the partnership up front there. After which things started falling apart for the opponents. So in the context of the game, where Ecclestone came in and grabbed the wickets, there was something we've been expecting out of her, and finally she has delivered. Not that she wasn't consistent with her lines the other time around, but like we mentioned in yesterday's game, batters did go and try to punish her, which paid off the dividends for her. So now let's take a look at today's match जो होगा आरसीबी और एमआई के बीच। दोनों ही टीम इस गेम में एक हार का सामना करते हुए आ रही है। आरसीबी अपना पिछला मैच दिल्ली कैपिटल्स के सामने हारी थी और दूसरी ओर मुंबई इंडियंस यूपी वॉरियर्स के सामने हारी थी। दोनों ही टीम्स अब तक टूर्नामेंट में अपने 3 मैच में से 2 मैच जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह कंसोलिडेट करने की कोशिश रहेगी इस मैच में। फिलहाल मुंबई 4th पर है और आरसीबी 2nd पर है। दोनों ने 2 ही जीत रजिस्टर की है, बट मुंबई का रन रेट थोड़ा खराब है जिसके चलते अभी वो 4th है पॉइंट्स टेबल पर। जूली, आज के मैच के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत बड़ा मैच होगा ये डब्ल्यूपीएल के कॉन्टेक्स्ट से भी और इंडियन फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हम देख सकते हैं हरमनप्रीत कौर एक तरफ, वी आर होपिंग कि आज के मैच वो खेलेंगे और आई थिंक जो आर्टिकल्स भी पढ़े, आई थिंक शी इज लाइकली टू प्ले टुडेज मैच। और दूसरी तरफ उनकी स्मृति मांधना, तो उनके ऊपर जो आई थिंक वो जो उनका जैसे वो विरुष का होता है वैसे ही हर मंधाना ऐसा बनाया गया है लास्ट सीजन ही, तो वो देखने में भी काफी मजा आएगा। हर मंधाना का टाइम आ चुका है डब्ल्यूपीएल के अंदर, तो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा। और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स अगर हम देखें तो एमआई ऑफ कोर्स लीडिंग द चार्ज 2-0 उनका रिकॉर्ड है, बट अगेन ऑब्वियसली दोनों मैचेस उन्होंने चेस करते हुए जीते, तो वहां पे एक लूप होल आरसीबी को जरूर मिल सकता है। और यजाद, आपने जैसे कि परफेक्टली पॉइंट आउट करा कि ये दोनों टीम्स ने सिमिलर स्टार्ट करी है। पहले दोनों मैचेस एमआई ने भी जीते थे, आरसीबी ने भी जीते, और जो तीसरा मैच दोनों टीमों ने खेला है वो हारा है। तो एक हार के बाद ये दोनों टीमें आमने सामने आएंगी, तो देखना होगा कि आज कौन सी टीम एक जीत रजिस्टर कर पाती है यहाँ पे। बट आई थिंक ओवरऑल एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है। दोनों टीमों में वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स हम देखने वाले हैं। एक तरफ सोफी डिवाइन, एलिस पेरी इफ शी इज फिट शील प्ले, इफ नॉट बट बाकी अगर मुंबई इंडियंस भी देखे तो एनएस भी है, अमीलिया कर है, हरमनप्रीत कौर खुद है, तो हेली मैथ्यूज ऑफ कोर्स। सो काफी आई थिंक पावर पैक्ट और स्टार स्टडेड परफॉर्मेंस की उम्मीदें हम रख सकते हैं आज के मैच में। बिल्कुल, और अगर आप सोचना चाहे इस तरह से तो इट कुड पोटेंशियली बी वन ऑफ दोज नॉकआउट गेम्स, नॉट राइट नाउ but your eliminator or a final per se, because these are two of the strongest teams in the tournament so far, apart from Delhi. Of course, Delhi is a very strong team, but if I were to pick my top 3 right now, it would be Mumbai, RCB and Delhi. So from that point of view, Pratik, what would you like to tell us about today's match?
So today's game between RCB and MI, pretty much stands even Steven, because both of them have gotten two wins and are coming out of a loss. And I feel, this is the crossroad which defines every team's mettle as they progress into the tournament. Because in a tournament which has a longer format like this, it's important to bounce back time and again and leave the past behind you and look forward for the future. As mentioned, we have some very good players lined up for today who have done astronomical stuff in the past, and a lot of expected out of them as well. And for me, I think up until now, RCB's batting lineup has lived up to the expectation. You've gotten everyone at the top firing there, and the previous time around for them, the bowling did not come together that well as they would have thought, because somewhere they were about 15 to 20 runs more expensive than what was expected. And even in their death bowling aspect, a lot of runs have been leaking. So that is the one thing they would like to address. But other than that, they've got many positives to carry along into this game, and I'm hoping they have a good outing as an RCB fan. And now coming to Mumbai Indians' loss the previous time around, it was quite shocking. The way UP Warriors went on to beat them. That opening stand change where Navgire came in and shifted the gas for them. That wasn't something we were prepared for. So it would have taken quite a bit for them to digest the loss. But again, led by a leader like Harmanpreet Kaur, the entire unit would have made up for the loss, and I'm hopeful they come much more stronger today. So let's move on to our next segment, that is the fantasy picks. So, Julie, why don't you get us started? Okay, so in my fantasy picks for today's match between MI and RCB, दो विकेट कीपर्स मैंने लिए, यास्तिका भाटिया, ऋचा घोष। दोनों अच्छे फॉर्म में भी है। यास्तिका भाटिया ओपनिंग बैटर है, ऋचा घोष नंबर 4 पे आती है बल्लेबाजी करने के लिए आरसीबी के लिए। तो दोनों बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में भी है और विकेट कीपिंग बिहाइंड द स्टंप्स भी उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छा करती आई है अभी तक। उसके बाद बैटर्स हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना दोनों कैप्टन है रिस्पेक्टिव टीम्स के। दोनों अच्छे फॉर्म में है। स्मृति मंधाना सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है 130 रनों के साथ। अच्छी पारियां उन्होंने खेली है पिछले 2 मैचेस में। और हरमनप्रीत कौर ऑफ कोर्स पिछला मैच वो निगल के कारण खेल नहीं पाई थी, पर पहले 2 मैचेस में 101 रन का टोटल है उनका अभी तक। तो वो दोनों बल्लेबाज भी अच्छे फॉर्म में है। उसके बाद ऑलराउंडर्स से पैक्ड है मेरा फैंटेसी 11। अगर हम देखें तो 5 ऑलराउंडर्स मैंने मेरे टीम में रखे हैं, स्टार्टिंग विथ हेली मैथ्यूज, नैट सिल्वरब्रंट, सोफी डिवाइन, अमीलिया कर और सोफी मोलिनी। तो अगर आप ये पांचों ऑलराउंडर्स देखें तो यहाँ पे मैंने वैरायटी रखी है। हेली मैथ्यूज एक ऑफ स्पिनर है, अमीलिया कर लेग स्पिनर है, सोफी मोलिनी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो स्पिन के जो डिपार्टमेंट्स है वो मेरे टिक हो चुके हैं। यहाँ पे अमीलिया कर लेग स्पिनर एंड ऑफकोर्स नैट सिल्वरब्रंट और सोफी डिवाइन मीडियम पेसर्स है। एंड फाइनली 2 बॉलर्स जो रेणुका सिंह ठाकुर और इजी वॉन्ग को मैंने रखा है टीम में। आई एम नॉट श्योर वेदर शबनम इस्माइल इज फिट टू प्ले टुडेज गेम। If she is fit, of course, Shabnam Ismail will be there instead of Izzy Wong. If not, Wong जगह ले लेगी fantasy picks match. Pratik, what does your Dream 11 fantasy line for today look like? Yeah. So starting off with one wicket keeper, that is Richa Ghosh. She's been among the runs, and she's gotten the big shots up her sleeve, and she's the one player we've been looking forward to in the middle order, someone who comes and steadies the innings. And my batters would consist of Harmanpreet Kaur, Smriti Mandhana, and Sabbhineni Meghana. Meghna has been in extremely good form, and even the previous time around in RCB's loss, she stood up there and played like a warrior, giving her everything. And coming on to my all-rounders, it would consist of NSB, Sophie Devine, Amelia Kerr, and Sophie Molyneux. All of these girls have been in immaculate form and have played a major role in their respective teams' victory. So yeah, these are the big fishes, and then we've gotten Pooja Vastrakar, Renuka Singh Thakur, and S. Asha as the bowlers. My skipper is Smriti Mandhana. The last time we saw her, opening the batting, it was so fluent, and the elegant shots that Smriti is known for came off very naturally. And the vice captain is
That Cyber Brunt. She's contributed with both bat and ball, and I think in the context of today's game, she'd have a huge impact. Okay. So let's move on to our key players for today. First, from the MI perspective, our first key player from Mumbai Indians is Harmanpreet Kaur. हरमनप्रीत कौर बतौर बैटर और कप्तान है एमआई की इस सीजन काफी अच्छा फॉर्म दर्शाया है उन्होंने। पिछला मैच एक इंजरी के चलते हुए उन्होंने मिस किया था। और उन्होंने इस सीजन में 101 रन बनाए हैं अभी तक। और एक एसेंशियल एलिमेंट है फ्रॉम द मुंबई इंडियंस पर्सपेक्टिव। लाइक वी सॉ लास्ट मैच उन्होंने मिस किया था। मुंबई इंडियंस वेंट ऑन टू लूज दैट मैच। कहीं बैटिंग फर्स्ट में थोड़े रन्स रह गए होंगे जो उनके होने से ऐड हो जाते टोटल में। और कप्तानसी में भी एक फर्क पड़ता है व्हेन यू आर लीडिंग द योर नेशनल साइड फॉर अ लॉन्ग टाइम and when someone who's not leading takes over तो वो कैप्टनसी में हमें वहाँ चेंज देखने मिला। ऑफ कोर्स शबनम इस्माइल वाज मिसिंग but definitely Harman could have marshaled the troops better as compared to NSB. No disrespect toward NSB, but just in general the captaincy of Harmanpreet Kaur has essentially been the defining point in Mumbai Indians success so far. Julie, how would you like to summarize this situation of Harmanpreet? आई थिंक इंजरी के बाद जब वो आज मैच खेलने उतरेंगे तो मुंबई इंडियंस यही सोचेंगे या उम्मीद करेंगे कि उनकी कप्तान फुल्ली फिट है, क्योंकि आई थिंक कभी-कभी प्लेयर के ऊपर भी प्रेशर होता है कि पिछला मैच वो इंजरी के कारण बाहर बैठे थे और उनकी टीम वो मैच हारी थी। तो डिस्पाइट नॉट बीइंग 100% फिट, इवन इफ शी अग्रीज टू प्ले एंड इफ शी इज नॉट फिट, तो आई थिंक थोड़ा-सा उनके परफॉर्मेंस में भी इश्यू आ सकता है। बट आई थिंक एज फैंस वी शुड होप कि हरमनप्रीत कौर इज फिट एंड फाइन और वो आज अपना 100% दे पाए। और ऑफ कोर्स यज़ा जैसे आपने मेंशन करे उनके स्टैट्स 101 रन बना चुकी है 2 मैचेस में, जिसमें एक अर्धशतक भी लगाया था उन्होंने। नंबर 4 पे बल्लेबाजी करती है मुंबई इंडियंस के लिए। और पिछला मैच जो यूपी वॉरियर्स के खिलाफ हुआ था, हमने देखा कि अमीलिया आई थी नंबर 4 पे बल्लेबाजी करने के लिए और अमीलिया ने अच्छा किया। आई थिंक 20 ऑड रन उन्होंने स्कोर करे। पर हरमनप्रीत एक आई थिंक एक ग्लू की तरह है मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस के खेमे में। अगर हम देखें, शी होल्ड्स द बैटिंग ऑफ मुंबई इंडियंस टुगेदर। तो आई थिंक वो आई थिंक थोड़ा-सा मिस करा मुंबई इंडियंस ने उनके सर्विसेज़, क्योंकि नैट सिवर ब्रंट भी इतने अच्छे फॉर्म से नहीं गुजर रही है। अगर एनएसबी अच्छे फॉर्म से गुजर रही होती तो शायद हरमनप्रीत कौर की कमी इतनी महसूस नहीं कर पाते एमआई की टीम। बट एनी विच वेज अभी हरमनप्रीत आज हम देखेंगे ही उनको मोस्टली, तो वो दोबारा आएगी और उनकी कैप्टनशिप आई थिंक वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। जिस तरीके से वो जो डोमेस्टिक टैलेंट है उनको भी हैंडल करती है, साइका इशाक हो या बाकी उमेरा काजी जिसको हमने देखा था पिछले मैच के अंदर, उनका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। पर अगर हरमनप्रीत होती तो शायद उनको कुछ और तरीके से भी यूज़ कर पाते थे, पर वैसा नहीं हुआ। तो देखते हैं आज आने के बाद उनका फॉर्म कैसा रहता है और क्या वो वही जो फॉर्म उन्होंने मेंटेन करा था या स्टार्ट करा था वही फॉर्म से वो पिकअप कर पाती है कि नहीं फोर्थ मैच में। बिल्कुल। और फिलहाल मुंबई इंडियंस आर नॉट इन द टॉप 3 व्हिच इज योर क्वालिफिकेशन सिनेरियो बेस्ड। और 3 मैचेस हो चुके हैं अभी। प्रतीक, व्हाट इज योर रीडिंग ऑफ द हरमनप्रीत कौर इंजरी एंड हर मिसिंग द प्रीवियस गेम? Well, so the fact that she would be coming off an injury, might also mean that she would step onto the field a little rusty with the bat. This is just a possibility, and given her troubles against the spinners, she would be up against quite a few potential spinners up there today. Be it Sophie, Asha, Georgia Wareham, or even Shriyanka Patil if she's in the 11. So. It would be quite a challenge, but I think she's been in and out of such situations in multiple occasions, and it shouldn't bother. She would be in the 11 only because she's fit. So let's just hope that she's gotten all bases covered. And the fact that she missed her game previous time around, obviously a void was felt in the Mumbai Indians dugout because she does form the fulcrum of their middle order batting. Someone who makes sure the calmness is there and gets her experience into every situation, and also plays the aggressor when required. So like Julie mentioned, somewhere Mumbai would have felt that void, but it must be a good homecoming for her today if she's in the 11, and let's hope for her to get some runs. Let's move on to our next key player from the Mumbai Indians, that is Amelia Kerr.
Her figures this season with 7 wickets, with best figures of 4 for 17. करंट पर्पल कैप होल्डर है इस सीजन में, बतौर न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर है, नंबर 5 पर बैटिंग करती है मुंबई इंडियंस के लिए। और बॉलिंग की जितनी तारीफ की जाए उनकी उतनी कम रहेगी। और फील्डिंग में भी वो एक एक्स्ट्रा डिमेंशन ऐड करती है। वीव सीन हर पुल ऑफ दोस ग्रेट कैचेस, एंड यू नो शी सेव्स योर ओकेजनल 1 and 2 runs in the field too. Julie, what is Amelia Kerr's impact on today's game, as you know, Mumbai Indians face off one of the strongest sides in the tournament? थिंक अमीलिया कर काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगी आरसीबी के खिलाफ, क्योंकि डब्ल्यूपीएल 2023 अगर हम याद करें तो दूसरा मैच जो हुआ था एमआई और आरसीबी के बीच, तब अमीलिया कर प्लेयर ऑफ द मैच थी। उन्होंने अच्छा ऑलराउंड प्रदर्शन करा था एमआई के लिए, 30 ऑड रन कुछ करे थे, 3 विकेट्स भी चटकाए थे और एक इंपॉर्टेंट रोल खेला था एमआई की जीत के अंदर। तो आई थिंक आज अमीलिया कर अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ उतरेगी, और अभी तक जो तीनों मैचेस में हमने देखा है अमीलिया कर को, चाहे वो बल्ले के साथ हो या गेंद के साथ हो, उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है एमआई के लिए। 78 रन आए हैं उनके बल्ले से, नंबर 5 पे बल्लेबाजी करते हुए, और 7 विकेट जैसे कि आपने कहा, और पर्पल कैप होल्डर भी है। बट आई थिंक वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर्स, जब मैं उनके स्टैट्स देख रही थी, मुझे लगा कि उनका जो स्ट्राइक रेट है, बॉलिंग स्ट्राइक रेट, दैट इज द बेस्ट इन दिस टूर्नामेंट सो फार। हालांकि केवल 3 ही मैचेस खेले हैं मुंबई इंडियंस ने, स्टिल अर्ली डेज इन द टूर्नामेंट, बट इट इज ऑलवेज गुड टू हैव सच अ पॉजिटिव फिगर अंडर योर बेल्ट। जो उनका बॉलिंग स्ट्राइक रेट है वो केवल 10 का है, तो मतलब एवरी 10 बॉल्स शी इज एक्सपेक्टेड टू पिक अप विकेट्स। और वैसे अगर हम कैलकुलेट करें, देन प्रोबेबली इफ शी बॉल्स 24 balls in every match, then we can expect 2 wickets in every match from her. तो आई थिंक अमीलिया कर का रोल बतौर ऑलराउंडर बहुत अहम होगा एमआई के लिए आज। Pratik, what would you like to tell us about Amelia Kerr and her all-round prowess? Well, to add on, the one thing that has stood out for me in Amelia's bowling is her ability to mix it up with the googlies and the conventional leg spinners. The fact that batters are not able to pick it, coming out of her hand, and that poses a major problem because you don't know which way it is going to turn and as to where you could possibly play the shot. That being one thing, and there have been multiple batters who've stepped out to her on regular occasions and have gotten beaten. So her ability to pull back the ball, when she sees the batter stepping out, is another very important thing. All of us know that being a leg spinner in a T20 format is quite difficult because batters are going to be on top of their feet to tackle you as a bowler, and I think that is what makes Amelia the bowler she is. And she also isn't the conventional leg spinner who tosses it up, and even in her follow through we can see her run past the crease, much like Rashid Khan, like I mentioned before also. So the mixture of these factors make it very difficult for batters to face her, and for her as a batter itself, she's played a couple of good innings where she supported her partner at the other end, and can also be counted as a reliable batter whenever there is a downfall of wickets and the team requires her. So she's a very integral part of Mumbai Indians unit and will play a crucial role in today's game as well. So let's move on to our key players from RCB. Our first key player is the captain Smriti Mandhana. बतौर कैप्टन और ओपनिंग बैटर है आरसीबी की, काफी बढ़िया सीजन रहा है उनका अब तक। 130 रन बनाए उन्होंने पिछले मैच में, काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा, जिसके चलते उन्होंने इस सीजन का अपना हाईएस्ट स्कोर रजिस्टर्ड किया, 74 रन्स का। So Julie, we've seen Smriti dictating terms. We've seen her, in the first match she was not able to attack as much, but from the second match onwards we saw her being proactive, shuffling around in the crease, utilizing the leg side, which was an open side considering the field is packed on the offside for her. So what do you think will be Smriti's role today in this match? थिंक स्मृति मंदाना ऑफ कोर्स चाहेंगी कि वो जो उनका अच्छा फॉर्म उन्होंने पिछले 2 मैचेस में लिया है, तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड करे अपने टीम के लिए, क्योंकि पहला मैच हमने देखा था केवल 13 रन ही बनाए थे स्मृति मंदाना ने। अच्छी शुरुआत नहीं थी उनकी डब्ल्यूपीएल सीजन के अंदर, और हमें डर था कि क्या जो आरसीबी का प्रदर्शन था डब्ल्यूपीएल 2023 में, क्या वैसा ही कुछ होगा, बट नहीं। सेकेंड मैच, थर्ड मैच स्मृति ने जिस तरीके से बाउंस बैक कराया, वो देखने में बहुत ज़्यादा मजा आया है। सेकंड मैच हमें याद होगा 43 रनों की पारी, और उसके बाद थर्ड मैच में 74 रनों की वो जो
पारी खेली, वो मैच विनिंग इनिंग्स ज़रूर हो सकती थी, पर आई थिंक 194 वाज़ टू बिग टू चेज़ फॉर आरसीबी द अदर डे अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। बट आई थिंक मुझे भी उनका जो बैटिंग अप्रोच है, एक अलग माइंडसेट से जो वो उतरी है, उनको भी पता है। आई थिंक ऑपोजिशन जो है, जब वो सामने होती है तो वो पूरा ऑफ साइड पैक करके रखते हैं उनके सामने, तो उनको कोई मौका नहीं होता, ज़्यादा गैप्स नहीं फाइंड आउट कर पाती, इसीलिए वो थोड़ा-सा आउटसाइड ऑफ ऑफ स्टंप जाके लेग साइड का पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। और वैसे ही हमने कुछ पिछले मैच में भी देखा डीसी के खिलाफ, तो वैसे ही अगर उनका अप्रोच रहेगा तो आज भी काफ़ी सक्सेसफुल हो सकती है। हालाँकि उनके सामने आज मुंबई इंडियंस की एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप होगी, और हरमनप्रीत कौर की कैप्टनशिप के अंडर जब ये बॉलिंग लाइनअप स्मृति के ऊपर अटैक करेगी, तो आई एम श्योर दे विल बी रेडी विद देयर प्लान्स। काफ़ी होमवर्क भी करा होगा, स्मृति के क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ्स है। तो आज ये एक कॉम्पिटिशन अच्छा हो सकता है स्मृति और एमआई बोलर्स के बीच। बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम हर बैटिंग, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हर कैप्टनशिप अ बिट ओवर हियर। आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जब वो मैच हुआ था आरसीबी का, आई थिंक शी जस्ट मिस्ड अ ट्रिक, मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर हमने वो जो स्कोर कार्ड अगर देखा होगा ना, तो सोफी डिवाइन और सोफी मॉलिनी, टू ऑफ देयर इकोनॉमिकल बॉलर्स आई वुड से। रेणुका सिंह ठाकुर का इकोनॉमी कुछ 7 था, पर ये दोनों का 7.7 था। बट इन दोनों को केवल 3-3 ही ओवर मिले, वो पूरा स्पेल कर नहीं पाए। तो आई थिंक कुछ कैलकुलेशन एरर हुए होंगे स्मृति मानधना से, एंड ऑब्वियसली बीइंग अ कैप्टन एट सच अ बिग स्टेज, वो कभी-कभी हो सकता है किसी भी प्लेयर से। बट आई थिंक इफ शी इज एक्स्ट्रा कॉशियस और केयरफुल टुडे विथ रिगार्ड्स टू यूजिंग द बॉलर्स प्रॉपरली, और जो अच्छे बॉलर्स है उनको पूरा 4 ओवर का स्पेल दे दे, क्योंकि श्रेयांका पाटिल से वो आखिरी ओवर कराना आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स वी कैन से, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी रनों पे जा चुकी थी, और उनको और एक ओवर देना, वो आई थिंक वो मिस्टेक था उनसे। बट आज अगर वो थोड़ा सा और केयरफुल रहे अपने बॉलिंग चॉइसेस के साथ, तो आई थिंक आज एक अच्छा दिन हो सकता है उनके लिए। बिल्कुल, जैसा आपने उस 74 रन की पारी का मेंशन किया, जब तक वो और सोफी डिवाइन क्रीज पे थे साथ में, इट लुक्ड लाइक आरसीबी वुड गेट टू दैट टोटल इवेंचुअली. Pratik, what would you like to tell us about Smriti Mandhana's role in today's game? Well, after each and every game this season, she's grown from strength to strength, and she's been middling the ball extremely well. And I feel even in today's game, she needs to play a similar role. Last time around, when she was up against the likes of Madison Cap, the way she maneuvered the ball around early on in the innings defined as to how the power play panned out for RCB. So it's extremely essential for someone like her to make use of the 6 overs where only two fielders are outside and play the strokes. She plays with full liberty. We even saw her take on the aerial route last time around and quite comfortably. All she had to do was, get into the line of the swing and loft it over the 30-yard circle. I mean, it looks that convenient for us because she makes it look that easy, but that is something she's known for. And up until now, all of us used to only talk about her dashing cover drives on the offside and her cut shots. But something I've observed is the way she's tackling the spinners as well. Whenever it is short, she's making use of the crease, shuffling onto the offside and playing the pull shot, or in general about how she's utilizing the space there is something very immaculate and something you do not see very often with opening batters, who are only up against the quicker bowlers. So all positives from Smriti Mandhana, and she will definitely play a very huge role today in this game because with the fall of her wicket early on, it would put pressure on the batters to come. You've gotten Sabbhineni Meghana at the number 3 position, and that is someone whom you don't want to expose of very early in the innings. So I'm hopeful Smriti makes yet another opportunity count for the RCB. So let's move on to our next key player for RCB today, that is Sabbhineni Meghana. इस सीजन में उन्होंने 125 रन्स बनाए हैं, एवरेज 62.5 की है उनकी, मिडिल ऑर्डर में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती है, और मिडिल ऑर्डर से ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा मिडिल ओवर्स में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती है. We saw her playing that one innings in the first game, and even in the last match after Smriti and Sophie Devine felt she was guiding RCB's chase before she was unluckily run out. जूली, सबनेनी मेघना के फॉर्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी आज? बेहतरीन फॉर्म में है मेघना, मेरे ख्याल से नंबर 3 पे बल्लेबाजी करती है, और पहली मैच में ही उन्होंने अर्धशतक लगाया था, तो एक अच्छी शुरुआत उन्होंने इस WPL 2024 में करी है।
और उसके बाद के जो दोनों मैचेस है उसमें 36-36 रन बनाए, तो ये दिखाता है कि तीनों मैचेस में उनका योगदान रहा है और एक अच्छी पारी उन्होंने खेली है, पार्टनरशिप्स भी काफ़ी अच्छे करे, एलिस पेरी के साथ हो या नदी डी क्लर्क के साथ हो उसके बाद, तो एक अच्छा नंबर 3 बल्लेबाज यहाँ पे आरसीबी को मिला है। बट आई थिंक जैसे 125 की हमने बात करी और मेरे ख्याल से ग्रेस हैरिस 153 रनों पर है, तो 28 रन दूर है वो ऑरेंज कैप से भी, बट ऑफकोर्स उनका कॉम्पिटिशन आज स्मृति मांधाना जो उनकी कैप्टन है उनके साथ भी होगा, जो खुद 130 रनों पर भी है। तो देखते हैं आज के मैच के बाद ऑरेंज कैप कौन पहनता है, स्मृति, सब्बिनेनी मेघना या ग्रेस हैरिस के पास ही रहती है। But I think talking about Meghna's batting, I think one of the, I would not say flaws, but probably कुछ एक issue हो सकता है उनके बल्लेबाजी के साथ कि यजाद प्रतीक आपने भी देखा होगा कि सब्बिनेनी मेघना टेंड्स टू गेट आउटसाइड ऑफ हर लेग स्टंप। आई थिंक वो उनका जो एक पहला जो एक ट्रिगर मूवमेंट जिसे हम यूजुअली कहते हैं क्रिकेटिंग वर्ड में, तो वो उनका जो ट्रिगर मूवमेंट है वो आउटसाइड ऑफ लेग स्टंप जाना और फिर बाद में कवर्स के ऊपर या एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से वो जो शॉट लगाना उनका है। आई थिंक अगर मुंबई इंडियंस ने भी वो अगर स्टडी करा होगा तो द बॉलर्स आर गोइंग टू फॉलो हर, और शायद अगर वैसे कुछ हुआ, इजी वॉन्ग या शबनम इस्माइल जो भी गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे वैसे अगर उन्होंने सब्बिनेनी मेघना के स्टंप्स को अटैक करा तो आई थिंक वो मुश्किल हो सकती है उनके लिए। तो आई थिंक आई एम अज्यूमिंग और आई एम होपिंग कि सब्बिनेनी मेघना मस्ट हैव फाउंड अ डिफरेंट वे आउट ऑफ टैकलिंग पेस बॉलर्स, पर आई थिंक ये मुझे थोड़ा सा उनके बल्लेबाजी में वीकनेस लगता है। And Pratik, what would you like to tell us about how Sabbhineni Meghana has, played a role as a crucial batter in the RCB lineup? Firstly, she's come as a great find to the RCB unit. Before beginning the season, the management would have never thought about, Meghana carrying along the middle order. So that is a very good prospect for RCB. And the way she's played through the matches, with the likes of Mandhana or even Perry in the middle, the mid-short innings where she's played, where she's only punished the bad balls and rotated the strike as well. So that has spoken volumes about the kind of player she is. And the last time around, she was in at a situation where RCB were desperately looking for runs and to get to that total of 195. So somewhere there, we could see her struggling. She wasn't able to get the boundaries at the right time or pierce the gaps. So as a middle order batter, once she's well settled, it is important for her to strike the boundaries as well, because then it would put a lot of pressure on the batters down the order. I'm not taking her credibility or even her performance in the previous games, but now that she's gotten runs under her belt, she would be riding high on confidence as well, to play the role of the aggressor from the beginning itself. So if that is possible, it would help batters like Richard Ghosh, who would come later on, to take a little bit of time and get going as well. So now let's take a look at today's game from a fan perspective. So for the Mumbai Indians fan, the captain Harmanpreet Kaur is set to be making her comeback. She was ruled out of the last game following a niggle. बट उसके बाद शार्लेट एडवर्ड्स जो मुंबई इंडियंस की कोच है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हरमनप्रीत कौर विल बी प्लेइंग द नेक्स्ट गेम होपफुली। सो जैसा जूली आप पहले कह रही थी कि जब आप कप्तान हो टीम की और यू सी यू डोंट प्ले अ गेम एंड योर टीम लूजेस, सो इवन इफ यू आर नॉट 100% देयर इज अ प्रेशर ऑन यू टू टेक द फील्ड एंड लीड द चार्ज। तो आपका क्या कहना है कि हरमनप्रीत कौर का आज जो कमबैक होगा वो do you see her being at her same strength as usual or do you think she'll be a little rusty? मेरे ख्याल से आई थिंक जो इंजरी के बारे में बात हुई थी वो सिर्फ एक निगल तौर के, आई थिंक निगल ही उसको कहा गया था, तो ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं था, तो शायद कुछ क्रैम्प या ऐसे छोटी मोटी इंजरीज होती रहती है प्लेयर्स को, हम देखते हैं यूजुअली। और अगर हम WPL का भी जो शेड्यूलिंग है और ऑफकोर्स 5 ही टीमें हैं, इसीलिए लाइक यू आर प्लेइंग वंस एवरी 2 डेज, तो विद इन 48 आवर्स यू हैव टू बी अप एंड रेडी टू प्ले द मैच, तो ये कभी कभी इट टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी, तो वैसे कुछ हुआ होगा हरमनप्रीत कौर के साथ भी, तो इसीलिए वो निगल के चलते आई थिंक वो टीम को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था, एक बड़ी इंजरी अवॉइड करनी होगी, इसीलिए शायद वो थर्ड मैच उनको कहा होगा कि हरमनप्रीत आप रेस्ट ले लीजिए और प्रोबेबली यू कैन बी बैक फिट फॉर द फोर्थ मैच एंड गोइंग फॉरवर्ड। तो आई थिंक ज़्यादा कंसर्न नहीं होगा एमआई को, वो वी आर होपिंग कि वो फुल्ली फिट होंगे और
अपना 100% देने की उनकी कोशिश रहेगी, क्योंकि वी ऑल हैव डिस्कस, यू, मी एंड प्रतीक, की कैसे उनका फॉर्म इम्पोर्टेंट है एमआई के लिए और उनकी कैप्टनशिप भी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक हरमनप्रीत कौर खुद को भी पता है, डिफेंडिंग चैंपियंस भी है ये टीम, तो आई थिंक वो उनका बेस्ट फुट फॉरवर्ड ही रखना चाहेंगे और आज उनको मौका मिलेगा तो ऑफकोर्स शी वुड लाइक टू मेक एन इम्पैक्ट। Pratik, Harmanpreet Kaur, what are your views? Well, adding on from the Mumbai Indians perspective, definitely everyone would be wanting her back and roaring to go again. And somewhere I feel, the magnitude of the injury may not be that high as well, because you would not want to aggravate the injury, like Julie mentioned. So she might be a little rusty, but she's also gotten runs on a consistent basis in this tournament, and she's gotten enough balls under her belt. She's played in the Chinnaswamy and would be again up there itself. So familiar conditions and not much of a pressure, considering that the rest of the batting unit is also doing well. I'm just hopeful that she, goes up against the spinners with, her A game and does not falter. Uh, so let's take a look at the matchups for today. So our first matchup for today is Sophie Devine versus Pace. So in the previous game we discussed too that Sophie Devine seems to struggle early on with the pace, and potentially she could be facing either a Shabnim Ismail or Izzy Wong, Nat Siva Brunt from the Mumbai Indians perspective. So her average overall is 32.41, which drops to a staggering 23.55 against pace. Julie, what do you think will be Divine's game plan today when she takes on the Mumbai Indians? आई थिंक डिवाइन ज़्यादा कुछ आई थिंक समस्या या मुश्किलें नहीं होंगी मेरे ख्याल से पेस के खिलाफ उनको, क्योंकि ये सीज़न में भी हमने देखा है कि ऑफ स्पिनर के खिलाफ आई थिंक उनको थोड़े प्रॉब्लम्स रहे हैं। पहले 2 मैचेस में ऑफ स्पिनर्स ने उनको आउट करा था और ऑफ कोर्स तीसरे मैच में डीसी के खिलाफ जो हुआ था वो अरुंधति रेड्डी ने उनका विकेट लिया था। बट आई थिंक वो एक अच्छे स्टार्ट के बाद उनका विकेट गया था, तो आई थिंक जैसे हम कहते हैं कि हर विकेट फेल अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, तो वो थोड़ा-सा स्कोरिंग रेट अप करने की कोशिश उनकी थी और तभी उनका विकेट चला गया। ऐसा नहीं कि कोई एकदम पिच ऑफ अ डिलीवरी थी या सोफी डिवाइन मिस्ड इट कंप्लीटली, वैसा मुझे कुछ सिचुएशन लग नहीं रहा है। आई थिंक पिछले मैच के बाद उनको आई थिंक शी हैज़ रीगेन्ड हर फॉर्म, तो आज मुझे लग रहा है कि वो दोबारा एक अच्छी पारी खेलने की उनकी कोशिश रहेगी। स्मृति मांधाना जो दूसरे एंड पे अच्छी बल्लेबाजी करती आई है, उनका वो अच्छा साथ देगी मुझे लग रहा है। और यज़ाद आपने जैसे पॉइंट आउट करा, अच्छे एमआई के पास पेसर्स है, इस्माइल वोंग जो भी खेलेगा आज, उसके बाद एनएसबी है, पूजा वस्त्रकार है। तो आई थिंक सोफी डिवाइन को आई थिंक थोड़ा-सा कॉशियस आई थिंक होना होगा जब भी कुछ स्लोअर वंस का अगर इस्तेमाल करेंगे ये बॉलर्स तो, क्योंकि वी ऑल नो दैट सोफी डिवाइन लव्स पेस ऑन द बॉल और ये बॉलर्स को भी पता है कि सोफी डिवाइन को पेस के साथ खेलने में मज़ा आता है। तो आई थिंक जो स्लोअर वंस या चेंज अप्स का जो इस्तेमाल करेंगे एमआई के बॉलर्स, आई थिंक शी विल हैव टू रीड द बॉलर फ्रॉम देयर हैंड। अगर वो करने में वो सक्सेसफुल रहे तो आई थिंक ज़्यादा इश्यूज नहीं होंगे, क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा कि वो काफ़ी आक्रामक खेल रहे थे और आज भी वैसे ही कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं उनसे। Pratik, as an RCB fan, does this matchup of Sophie Devine versus your Shabnim Ismail or an Izzy Wong be of any concern to you? Starting off, in the previous game, Sophie Devine wasn't exposed to the Pacers, that consistently, because Smriti Mandhana took up the charge and, played the majority of the chunk of the balls in the power play. So we couldn't see anything up there. But, she could be up against Shabnim Ismail and Izzy Wong with the new ball. And we've seen both of these girls as to how they have swung the ball around, be it bringing in or going out. They have been successful in cramping the batters for any room, and with the ball swinging in lately, there is hardly any time to get your bat at the desired position. And I've also come to notice that Sophie Devine has gotten a couple of inside edges, in her previous outings. So she should be cautious about the new ball early on, maybe stand a couple of steps ahead of the crease, so that it would help her to cut the swing and play a little cautiously, but again with the authentic divine way of like getting to play the big shots from the very beginning itself. And I think if she's gotten that basis covered, she should move on from there, even though the last time around she did falter, after those
humongous sixers to the off spinner. But let's just hope and pray that she's gotten much more in store today and maneuvers the ball in the required way. Moving on to our next matchup for today, that is Haley Matthews versus Space. From one all-rounder struggling against Space to another. बतौर ऑलराउंडर है मुंबई इंडियंस की भी और वेस्ट इंडीज की भी. यास्तिका भाटिया के साथ हमने उन्हें ओपनिंग करते हुए देखा है और काफी ओकेजन्स पे एक क्विक स्टार्ट देती है मुंबई इंडियंस को. इस सीजन थोड़ा फॉर्म ऑफ लगा है बट पिछले मैच में उन्होंने वो अर्धशतक जड़ा था जिससे चलते होपफुली हर फॉर्म विल बी बैक. Her usual average in the women's T20s is 22.14, but while facing the Pacers, it drops to 15.82. Julie, there are Pacers like Renuka Thakur in the RCB lineup. There's Sophie Devine as well with the new ball. So, what should be Haley's game plan against the RCB Pacers today? मेरे ख्याल से हेली मैथ्यूज एक ऐसी प्लेयर है, आई थिंक शी इज़ मोर ऑफ अ रिदमिक काइंड ऑफ अ प्लेयर, ऐसे मुझे लगता है उनकी जब भी बल्लेबाजी मैं देखती हूँ, क्योंकि एक बार उनको अगर रिदम मिल गई, इफ शी इज़ मिडलिंग द बॉल वेल, तो वो बड़ी इनिंग्स में वो तब्दीली होगी उसकी. तो आज हेली मैथ्यूज का वैसा ही कुछ अप्रोच होना चाहिए कि प्रोबेबली स्टार्ट ऑफ अ बिट स्लो, क्योंकि उनके सामने रेणुका सिंह ठाकुर जैसी एक खतरनाक, मैं कहूँगी, इन स्विंगिंग बॉलर होंगी, और हमने देखा है कि कितना लीथल इन स्विंग करती है रेणुका सिंह ठाकुर. तो इफ आई एम हेली मैथ्यूज, आई वुड सी टू इट कि मेरे बैट और पैड के बीच ज़्यादा गैप मैं ना रखूँ, बिकॉज दैट विल बी द बिगेस्ट ब्लंडर आई वुड मेक. अगर मेरे बैट और पैड के बीच में बहुत गैप है तो वो रेणुका सिंह ठाकुर की इन स्विंगिंग डिलीवरी वो गैप में से जाके सीधा मेरे स्टम्प्स को क्रैश होने वाली है. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज बैट पैड का गैप कम होना चाहिए, एंड प्रोबेबली सेकंड थिंग वुड बी रीच एज क्लोज टू द बॉल एज पॉसिबल. पिच ऑफ द बॉल तक जाके खेलिए, जो भी आपके ड्राइव्स हो, स्ट्रेट ड्राइव्स हो, ऑन ड्राइव्स हो और ऑफ ड्राइव्स हो, कोई भी ड्राइव्स अगर आपको खेलना है तो आई थिंक यू शुड रीच टू द पिच ऑफ द बॉल एंड प्ले दोज ड्राइव्स. और स्विंग नेगेट करने की कोशिश अगर उनकी होगी, खासकर रेणुका सिंह ठाकुर के खिलाफ मैं कहूँगी, और सोफी डिवाइन ऑफकोर्स जो खुद भी आई थिंक ओपन करेंगी रेणुका सिंह के साथ, तो आई थिंक थोड़ा क्रीज के अगर बाहर वो खड़ी रहे तो उससे भी स्विंग नेगेट हो सकता है, ताकि एलबीडब्ल्यू का भी थोड़ा चांस कम हो जाए. और ऑफकोर्स जो बैट पैड का मैंने गैप उसकी जिक्र की, आई थिंक वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. तो आई थिंक हेली मैथ्यूज का ये अप्रोच होना चाहिए, बट आई थिंक लुकिंग एट हर रिकॉर्ड जो अभी तक है WPL के अंदर, पेसर से ज्यादा मुझे लगता है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने उनको ज्यादा तकलीफ दी है. दूसरे मैच में तनुजा कंवर ने उनका विकेट लिया था, तीसरे मैच में राजेश्वरी गायकवाड़ ने. तो आई थिंक आफ्टर द पेसर्स, इफ शी लास्ट आफ्टर द पावर प्ले ऑल्सो, व्हेन द स्पिनर्स कम इनटू प्ले, आई थिंक वहां पे भी देखना होगा वो कैसे बैटिंग करती है. बिल्कुल. Pratik, what do you think? How should Haley Matthews, counter the threat of Renuka Thakur, Sophie Devine? What should be her game plan in today's game? Well, the previous time around, it was just looking like Haley Matthews was finding ways to get out because there were a couple of drop chances and the ball kept going up in the air but not crossing the boundary line. And I feel this is majoritively because she comes up in the power play, where there are vacant open spaces outside the 30-yard circle. So she goes to take the aerial route. But again, somewhere she's not getting close enough to the ball, to make sure that the ball connects well. And the new ball does quite a bit early on, moves in and out. And maybe to negate it, like I mentioned, for the other batter as well, she could stand a little outside the crease to cut the swing and play with the intention to play out the new ball, because once you're set, you can get going. And even the fact that she's gotten some runs under her belt, and it's high time to capitalize on this, because if she, God forbid, it shouldn't happen, but again, if she goes out for a lesser total today, then it would again be, starting off from square one for her in the next outing. So it's important for her to assess the condition. And like Julie mentioned, Renuka, someone who's gotten the ball to move around, play cautiously, and ensure that the bat pad gap isn't there. So let's see as to how things pan out for her and the Mumbai Indians today. So before we move on to the predictions for today, we have a fan question that is from Maitrey. साइका इशक का MI के लिए और एस आशा का बैंगलोर के लिए रोल कैसा रहेगा? So like we saw last season, Saika Ishak led the wicket takers tally long into the tournament before she was eventually taken over by Haley Matthews. And even Asha Shobna, in the first game of the tournament, she picked up 5 wickets.
she's not been able to get a breakthrough post those two games. But what do you think, Julie, will be their contribution to the side today for their respective sides? आई थिंक ये दोनों स्पिनर्स बहुत अहम है अपने रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए, साइका एमआई के लिए ऑफ कोर्स, और आशा शुभना आरसीबी के लिए। और हमने देखा है कि साइका का जो पिछले सीजन में फॉर्म था वो अनफॉर्चुनेटली इस सीजन में वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया, पर आई थिंक वो किसी भी बॉलर के साथ होता है, नॉट एवरी डे इज द सेम। तो आई थिंक उसी के बाद ही हमें एक्चुअल जो ट्रू कैरेक्टर है बॉलर का वो पता चलता है। एंड जितना भी हमने साइका का देखा है डब्ल्यूपीएल 2023 में हो या इंडिया के लिए जब उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू करा है, शी इज़ अ फाइटर। तो आई थिंक वो गिव अप करने वाले प्लेयरों में से है नहीं। तो आई एम श्योर कि आज अगर उनको मौका है मिलेगा ऑफ कोर्स, तो वो अपना 100% देने की कोशिश करेगी, चाहे वो नई गेंद के साथ हो या मिडिल ओवर्स में हो। तो उनका रोल दोबारा इंपॉर्टेंट रहेगा। शी इज़ द ओनली लेफ्ट आर्म स्पिनर इन द लाइनअप, इन द प्लेइंग 11 आई मीन टू से, फॉर मुंबई इंडियंस। तो उनका रोल तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट होगा, बट गिवन द फैक्ट दैट शी हैज़ नॉट बीन अमंग विकेट्स, तो उनका रोल यही होगा कि प्रोबेबली ज़्यादा से ज़्यादा डॉट बॉल्स करे, इकोनॉमिकल गेंदबाजी करने की कोशिश करे, और शायद वो डॉट बॉल का प्रेशर किसी और बॉलर को भी अगर उसका फ़ायदा मिला तो भी एज अ टीम यू आर प्लेइंग वेल। तो आई थिंक साइका का रोल ये होगा एमआई के लिए। और दूसरी तरफ ये आशा शोभना जो एक अच्छी लेग स्पिनर है, पहली मैच में हमने देखा 5 विकेट्स चटका है, शी बिकेम द ओनली इंडियन बॉलर टू डू दैट इन डब्ल्यूपीएल। तो आई थिंक इतने अच्छे शुरुआत के बाद ऑब्वियसली किसी प्लेयर के ऊपर भी प्रेशर आ सकता है, बिकॉज एवरी मैच देन यू एक्सपेक्ट somebody like Asha Shomna to pick up 5 or 4 wickets. तो ये क्रिकेट में ऐसा होता नहीं, नॉट एवरी डे इज द सेम एज आई मेंशनड। तो आई थिंक आशा शोभना ऑल्सो हैज टू लर्न, क्योंकि आफ्टर अ कपल ऑफ गेम्स द बैटर्स विल ऑल्सो रीड यू कि क्या हो रहा है, क्या अलग कर रही है आशा शोभना, वो जो नॉवेल्टी आपकी रहती है वो भी कम हो जाती है। तो आशा शोभना विल ऑल्सो बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या वो वेरिएशंस कर पाएगी क्या, या कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश वो होगी आशा शोभना से। बट जस्ट लाइक आई सेड फॉर साइका, अगर विकेट्स नहीं आ रहे तो डॉट बॉल का प्रेशर बनाओ, और शायद उस प्रेशर की वजह से आपको विकेट मिले, या किसी आपके जो अदर बॉलर्स है उनको विकेट मिल सकती है। तो कीप इट सिंपल, डॉट बॉल्स डालो और आई थिंक विकेट्स आएंगे। Pratik, what would you like to add on to this conversation? Well, so to start off with Saika Ishak, she would be up against quite a few right-handers today, up at the top itself, starting off with Sophie Divine, Meghna, Richa Ghosh, So it would be interesting to see if she's gotten on the power play to, tackle the right-handers there and, get a few to zip in and toss it up, varying the pace. She hasn't been in good form, but what better opportunity than today, right? Where she's gotten a bunch of right-handers, and we've seen her over the years and months that she's delivered on a constant basis. And I just feel that this is a lean patch, and she could come back much more stronger. And about Asha, the way she started off was just immaculate. Again, someone we did not expect, would get off with a 5 wicket haul. And from the Indian cricketing perspective, that is immaculate. But I would like for her to, pull her length a little behind, because she's been a little overpitched. And, when you're overpitched as a leg spinner, you tend to go for runs. And yeah, so that's all about it. Just bowl the right areas, and who knows what's there in store for her today. So I'll quickly take your predictions for today. Julie, who are you backing to emerge victorious today? मुंबई इंडियंस फॉर मी टुडे। Pratik, I know you are an RCB fan, so I'll still ask you for formality's sake. Who do you think is going to win? I mean, I've obviously got a soft corner for RCB, and I hope they do get over the line. But I'm also hoping for one cracker of a contest here, because both of them are coming off losses and have world-class contenders. So for all us cricketing fanatics there, I hope the game is right at the top and goes till the wire. So that is all from today's show. We'll join you again tomorrow to discuss whether Mumbai Indians get back on winning ways, or do RCB win their game at their home venue. Thank you all for joining in. We'll see you all again tomorrow. Thank you.